rebel 1857 and after. The peasants and the sepoys. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay, allowances, and conditions of service. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and belief. Did you know that in those days, many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste? So, when in 1824, the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. They were severely punished, and since the issue did not die down, in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. The sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. Responses to reforms. The British believed that the Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. जो पहले विधवा हो जाती थी और मतलब औरतें तो उनको भी साथ में जलाते थे तो इन लोगों ने ये चीज स्टॉप किया था. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs, and their traditional way of life. There were, of course, other Indians who wanted to change the existing social practices. Those struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. देखो यहाँ पे एक बोल रहा है जो कि कॉमन एनिमी हो गए थे तो ये जो अगर इंडियंस है तो अब एक कह सकते हो कि ये लोग अब सभी अंडरस्टैंड करने लगे थे इनकी
प्रॉब्लम को, इनकी बातों को कि अब ये हमें हमारे खिलाफ ही हमें यूज कर रहे हैं। तो अब ये इकट्ठा हो गए। अब ये लोग क्या करते, वो बोल रहे हैं कि कॉमन एनिमीज बन गए, मतलब कि अभी सभी के कॉमन एनिमीज कौन थे? ब्रिटिशर्स। For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. After 100 years of conquest and administration, the British East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut. And a large number of people from different sections. जो मैप दिया है आपकी बुक में, देखो कहाँ से शुरू हुआ। पहले मेरठ टू दिल्ली कैसे वो लोग गए, कैसे पहुंचे, रिबेलियंस कैसे पहुंचे यहाँ पे, तो वो चीज देखो बताया गया इसमें। And a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. मतलब कह सकते हो कि 19th सेंचुरी में सबसे अगर बड़े लेवल पे कहो तो बात है ये लोग फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, देखो कैसे लोग पहुंचे थे, हम देख लेते हैं। From Meerut to Delhi. फांसी दे उसको लटका दिया किसी ने। On 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barrackpore. अब आप बताओ, आप लोग आंसर इसका कि मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? क्या उन्होंने ऐसा कर दिया? क्योंकि उन्होंने उसके अगेंस्ट कहते हैं कि वो काव और पिग जो बुलेट में डालते हैं तो उसका मांस से बने होते हैं, उसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट कहते हैं, तो उसके लिए उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और वो तो अगेंस्ट तो गए थे, लेकिन एक चीज और कहते हैं, उन्होंने वहाँ जो ऑफिसर्स थे जो उनको मार दिया था, इसी वजह से उनको, क्योंकि भाई उस टाइम पे किसी के ऊपर हाथ उठाना, सोचो आम आदमी पे नहीं तो ऑफिसर पे हाथ उठाएगा तो और ज्यादा। Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges. तो अब उसके बाद क्या हुआ, जो जितने सिपॉइज थे वो क्या करने, रिफ्यूज करने लगे, उनके काम करना नहीं चाहते थे। जितने भी गन वगैरह थे वो कहते हम नहीं चलाएंगे, अब अपने काम करेंगे। क्यों रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया क्योंकि जो बुलेट्स थी उसमें क्या किया गया थे, पिग्स और काऊ के फैट्स को मिलाया गया था, उससे बना था। तो उसमें क्या हो रहा है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों भ्रष्ट हो रहे थे, मतलब खराब हो रहे थे। कि हिंदू जो है कि गाय के लिए बहुत ज्यादा पूजनीय गाय उनकी, और मुस्लिम धर्म में जो पिग, ठीक है, इस वजह से दोनों के लिए, दोनों में आपस में लड़ाई करने के लिए ये सब कर रहे थे। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो सब धर्म से तो कुछ मानते नहीं थे वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे। Which was suspected of being coated with the fat of cows and pig. 85 sepoys were dismissed from service कितने सिपाही डिसमिस किए गए थे? and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. इसके बाद क्या करने लगे थे, उतने तो डिसमिस किए गए थे, फिर ये लोग अब बदतमीजी भी करने लगे। हाँ भाई, इतना ज्यादा उनके साथ होगा तो क्या करें, डिसोबे करें, और हर चीजों को क्या ऑफिसर्स को मना कर दे रहे थे, तो उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। फिर This happened on 9th May 1857. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys.
They attacked and killed the British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared a war on the Firangis. किसने वॉर डिक्लेयर किया? The sepoys of Meerut rode Sepoys all ने night डिक्लेयर किया किसके खिलाफ? फिरंगियों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। of क्योंकि कुछ 10th ज्यादा हाथ May बढ़ to गए reach थे Delhi हद से ज्यादा। in the early hours of सोचो next कि morning. हमारे हिंदू धर्म में या फिर इंडिया में हमें मतलब कि हर तरीके के हमारे कितने धर्म है, कल्चर्स है, ठीक है, तो उसको अगर आप उनके धर्म को ही पहले लोग क्या कर रहे टारगेट किए थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ गए, तब उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया था। As the news of their arrival spread, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again, British officers were killed. Arms and ammunition seized. Buildings set on fire. सुन के जितने भी वो लोगों ने जो चीजें बनाई थी, जहाँ पे वो लोग कब्जा किए थे, Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. इसमें क्या आप लोग समझो, अभी जो क्या बोला लोगों ने बहादुर शाह जफर, हाँ, बहादुर शाह जफर थे, तो उन लेटर लिखा था उन्होंने, लेटर लिखा था। किस चीज के लिए, किस बारे में, किसके रिगार्डिंग उन्होंने लेटर लिखा था? जो उन्होंने जो प्रथम पास करा था, लड़ाइयाँ जो हो रही थी। हाँ, लड़ाइयों के लिए, क्योंकि वो लोग दबाव डालने लगे ना, जो हमारे इंडियंस थे, कि ऐसा उस टाइम पे अगर सपोज करो कि वो लोग किसी की बात नहीं सुन रहे थे, सुनेंगे तो जो वहाँ का मेन एम्परर था उन्हीं की बातों को, तो बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, हम विद्रोह, हम तो मतलब छिड़ गया था, आप लड़ाई हम करेंगे, तो ये नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे उन लोगों से, क्योंकि वो लोग हैं ज्यादा और उतना ज्यादा हमारे पास हथियार नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोगों ने कहा कि प्रेशर डाला, तो इन्होंने फिर लेटर लिखा, जिसके बाद से फिर से This single step taken by Bahadur Shah had great implications. The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. उस टाइम पे मुगल डायनेस्टी जो बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि अप्रॉक्स वो रूल कर रही थी। Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. मैक्सिमम जगह पे जैसे कि अगर रीजन में कह सकते हो कि अगर मुगल रूलर थे तो और जितने अगर कंट्री बचे थे तो वहां पे भी रूल करने के उनके बिहाफ पे अदर डिफरेंट भी रूलर थे जो रूल कर रहे थे, ये चीज। And by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under the Mughal authority. The British had not expected this to happen. इसको टेंशन हो गया देखो। अब ये क्या करते They हैं? thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down. ये सोच रहा था कि जो कार्टिजेस उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, अगर ऐसा है तो इतना ज्यादा बड़े लेवल पे हमारे साथ But Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. इनका जो डिसीजन हुआ वो सब इन लोगों के एक वरदान साबित हुआ कि बड़े लेवल पे लोग रिबेल करने लगे थे। Often, when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. मतलब जो It gives them the courage, hope, and confidence to act.
अब ये लोग इतना जोश में आ गए थे कि अब बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे, काम करते जा रहे थे, और इनको क्या करते जा रहे थे ये लोग,